Hello friends, today I would like to talk something about hemorrhoids and fistula. Now, what is hemorrhoid? Hemorrhoids are basically enlarged vascular structures that surrounds the anal canal. Normally these vascular structures they are not much prominent. As soon as they become prominent, then they are termed as hemorrhoids in general. Now these hemorrhoids they may cause bleeding or they may become inflamed and may cause pain. If they are not inflamed, they will not cause pain. Now approach to the hemorrhoids. Now how do we ask history about hemorrhoids? In male and female, there are two different varieties of conflicts which we see in hemorrhoids. For example, if a female comes, particularly a post-menopausal female comes and is having a left-handed dominance, in that case, we need to probe about multiple anger conflict in the life of that female. And if a male person comes, then two things need to be focused in the history. Number one is the identity problem and number two is the territorial conflicts. So identity and territorial conflict and anger, these three in general causes hemorrhoids in male persons. Identity means who am I, what am I doing in this place, what am I worth for in this particular place, business or house, what are my capabilities, what can I do, all those things in a negative way which goes off in the mind of a person may cause hemorrhoids. Now talking about fistula. Now what is a fistula? Fistula is basically a abnormal communication between the anal canal and the skin of the anus, surrounding the anus. Now, why this fistula develops in certain people? For fistula, the homeopath searches for a particular conflict. Fistula happens we when we hold on to past negative emotions, we are not able to let go of the past negative things in our life. So severe negative emotions like these causes fistula. First thing to develop usually is an abscess. Later on the uh, track the fistula track develops. So all this is because of the negative emotions going on inside. Usually these two situations are surgical, but if a homeopath clearly observes or clearly finds out what is happening in the life of the person or patient, then without surgery also we may be able to eradicate such problems. I am presenting few cases which have improved by single dose of homeopathic medicine and patients have been benefited. Previously, the fistula case was operated and again this fistula reappeared. So now I've tried to resolve his conflict in the life and prescribed medicine, and after that the patient is better. Similarly for hemorrhoids cases also. So I am presenting few cases with follow-up videos. I hope people are enlightened by this system of medicine, and hopefully giving history in this direction will definitely help the homeopathic doctor also in order to find out the correct medicine. So this is for public awareness also for and for upgrading the doctors also. क्या होता था? ब्लड आता था और दर्द होता था बहुत तेज। हाँ और उसमें ब्लड आने के बाद, मीटिंग आने के बाद
फर्स्ट और लास्ट में आता था वो। अच्छा। दवा किया हाँ। यहाँ से, उसके बाद फिर पाइल्स बंद हो गया हाँ। और दर्द भी बंद हो गया। उसके बाद शरीर में मोटापा, वजन बढ़ने लगा। हाँ। और क्या परिवर्तन आया? और परिवर्तन में पहले ज्यादा खजूरी होती थी, जैसे और तकलीफ होती, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और कैसा महसूस कर रहे हैं दवाई के बाद? दवाई के बाद अब तो अच्छा है, सब ठीक है। क्या दिक्कत थी आपको? पाइल्स की थी। वो क्या है, बूंदा थोड़ा कम पड़ रहा, हल्की जलन जरूर है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले टाइटपन भी रहता था और पक्के जैसा जलन होती, बैठ भी नहीं पाता था। हाँ। और अब तो बैठ भी पाता हूँ और टाइटपन भी नहीं रहता है। स्वेलिंग कुछ थी? हाँ, स्वेलिंग कुछ थी? हाँ, सूजन सूजन कम पड़ रही, पहले थी? पहले थी। अभी जो डोज आपको खिलाई थी उसके कितने दिन पहले खिलाई थी? वो तो हो गया नहीं, 15 दिन। 15 दिन हो गया। तो वो डोज दी, उसके बाद से क्या परिवर्तन आया? उससे बाद में जलन आधी हुई। ठीक है। और क्या चेंज आया? और चेंज जैसे पकड़ने जैसा था वो नहीं होता है, लालपन नहीं रहता। वो क्या है, थोड़ा पहले छोटी छोटी फुंसियां नजर आती, वो भी नहीं है अभी। ठीक है। अब वो क्या प्लेन होता जा रहा है। ठीक है। दिमाग में जो टेंशन थी वो? हाँ, वो तो नहीं रखी नहीं। दिमाग थोड़ा शांत हुआ? हाँ। और क्या चेंज आया? बस ये काम करने की? काम तो करता हूँ, काम में कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मेरे को फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, तो उससे क्या है कि पानी निकलता था, वो बदबूदार पानी था। तो अभी जो आपकी रेगुलर 2-3 बार दवाई चेंज करी मैंने, उससे मेरे को थोड़ा फर्क पड़ा है। पानी कम है पहले से और बदबू भी कम है पहले से। और जनरल फीलिंग कैसी थी दवाई के अच्छी, बाद? मतलब कोई दिमाग में टेंशन किसी भी चीज का मतलब वो नहीं है मेरे को। अब जो अंदरूनी मेरा था ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, कि मेरे ना जो प्रॉब्लम है वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन करने के लिए मैं पहले ऑपरेशन करा चुका हूँ, तो उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिर ऑपरेशन कराऊंगा तो बार बार उस चीज को उस पर गाँव होगा तो दिक्कत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे जो दवाई लेके मुझे आराम पड़ा है, जैसे 2-3 बार दवाई चेंज करी मैंने, ठीक उससे फर्क पड़ा है मेरे को। और मैं चाहता हूँ कि रेगुलर अगर इस चीज को रखूँ, जब तक आप कहें कि जब तक ये दवाई चलती रहेगी, जब तक प्रॉब्लम आपकी जड़ से मत खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक दवाई चलती रहेगी तो मैं चलाऊंगा उसको, कोई बात नहीं है। ओवरऑल ठीक है अभी प्रॉब्लम? हाँ।